reactivity with oxygen, formation of oxides. अब ये जो एलिमेंट्स हैं जितने भी ग्रुप 16 के, वो हमारे पास 4 तरह की ऑक्साइड्स बनाती है. वन विच इज गोइंग टू बी मोनोऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड्स एंड हेप्टॉक्साइड्स. Amongst all the elements, sulfur जो है that is the only element जो कि सारे के सारे ऑक्साइड्स बनाता है. So what are we saying? ये बना रहा है मोनोऑक्साइड्स, okay, डाइऑक्साइड्स, trioxides and heptoxides. Okay, so monoxides में it is going to, sulfur is going to form all. This is monoxide, dioxide, sulfur trioxide and sulfur heptoxide. इन सब में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. दोनों के दोनों दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स. व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल से बनते हैं, राइट? सल्फर इज अ नॉन मेटल और आपको पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर. उसके बाद सेलेनियम जो है दैट डज नॉट फॉर्म मोनोऑक्साइड. द रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो सेलेनियम होता है उसका साइज इज गोइंग टू बी लार्जर, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच क्या कहते हैं पी बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती. उसकी वजह से जो सेलेनियम मोनोऑक्साइड बनता है दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल. बट ये रादर बनाता है सेलेनियम डाइऑक्साइड एंड सेलेनियम ट्राइऑक्साइड. Again, because of the larger size of selenium over here, heptoxide is also not stable. Tellurium का size is bigger, but still tellurium forms tellurium monoxide, although it is not going to be stable, but इसकी existence जो है वो होती है, ठीक है? And then we have tellurium dioxide, and it forms tellurium trioxide. So these are the oxides. Polonium भी दो बनाता है, one which is going to be polonium oxide and the other one which is going to be polonium dioxide. ठीक है? So these are the oxides which it forms. Now question जो कि इसमें आ सकता है when we are looking at the oxides, selenium dioxide जो sulfur dioxide जो यहाँ पे बन रहा है that is going to exist as a gas, right? Whereas selenium dioxide जो है that is going to exist as a solid, right? Now why this is happening? This is again because of the reason कि सल्फर और ऑक्सीजन इनमें टेंडेंसी है टू फॉर्म पी पाई एंड पी डी बॉन्डिंग. ठीक है? सो दोनों तरह के बॉन्ड्स ये बनाता है पी पाई एंड पी डी. सो उसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दे आर गोइंग टू बी वीक. क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे देयरफॉर इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज अ गैस. ठीक है? What are we saying? कि सल्फर और ऑक्सीजन they have a tendency to form p pi and p डी bonding, जिसकी वजह से forces of attraction they are going to be weak. As a result of which sulfur dioxide is going to exist as a gas. Selenium dioxide में p डी bonding does not exist, इसलिए it will only form covalent bonds and the forces of attraction in this case they are going to be stronger और selenium dioxide exist करता है as a solid. ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है reducing properties. Now when we talking of reducing properties over here, जैसे जैसे हम down the group जाते हैं वैसे वैसे reducing properties कम होती रहती है. So we generally say that when we are talking of sulfur dioxide, this is going to have reducing properties, ठीक है? Whereas जब हम लोग बात कर रहे हैं tellurium dioxide की, this is going to have oxidizing properties. ठीक है? So one has this thing. अब ये जो है all the क्या कहते हैं dioxides and trioxides, they all are going to be acidic in nature, right? Although acidic character down the group जो है वो decrease होता रहता है because metallic character increase होता रहेगा. तो अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड that reacts with water to give us an acid
H2SO3, right? In a similar manner, अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, it is going to form H2SO4. Okay, so both they are forming acids, therefore they are going to be acidic oxides. However, I said कि acidic property जो है that will keep on decreasing as we keep going down the group because the non-metallic character that will decrease. ठीक है? So this is what we have about the oxides. The next one which we have, that is reactivity towards halogens, formation of halides. Reactivity towards halogens, formation of halides. Formation of halides. Now हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है that is the most electronegative, second most electronegative element of the periodic table. तो ये फ्लोरीन के साथ बनाता है, हमने ऑलरेडी करा है कि फ्लोरीन के साथ जब ये कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीजन that is going to have a positive state, whereas fluorine is going to have a negative state. So it forms a compound of the type OF2. Now halogens में as we keep on going down the group, the stability of halides that will keep on decreasing. So हम देखते हैं कि फ्लोराइड्स जो होंगे वो सबसे स्टेबल होंगे, उसके बाद फ्लोराइड्स, उसके बाद ब्रोमाइड्स और उसके बाद आयोडाइड्स. ठीक है? So the most stable they are going to be fluorides. Now let's see, they form sulfur specifically forms two types of halides. One is going to be tetra and the other one that is going to be hexa. So tetra halides, टेट्रा हेलाइड्स जो ये बनाता है, ओवर हियर टेट्रा हेलाइड्स में टेट्रा फ्लोराइड्स जो होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं. सो वी हैव ओवर हियर व्हेन वी टॉकिंग ऑफ टेट्रा फ्लोराइड्स, सल्फर फॉर्म्स टेट्रा फ्लोराइड ऑफ द टाइप SF4 और ये जो SF4 है दैट इज गोइंग टू बी अ गैस, राइट? फिर सेलेनियम बनाता है SeF4 which exists as a liquid and tellurium forms TeF4 which is going to exist as a solid. That is because over here you can see that the bond strength जो है वो increase होती रहेगी. So bond strength अगर increase हो रही है तो tellurium fluoride that is going to exist as a solid, right? Now over here when we talking of the structure of SF4, the structure is very very important. Hybridization in this case is going to be sp3d. ठीक है? So we have sulfur, one lone pair जो कि रह जाता है that is directed towards the equatorial position. Why? Because अगर वो एक्सियल पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा तो उसको ज्यादा रिपल्शंस होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो दिस इज ऑफरिंग रिपल्शन एंड दिस इज ऑफरिंग रिपल्शन. बट जब वो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट रहता है तो एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, तीन पोजीशंस जो है वो रिपल्शन ऑफर करती हैं. ठीक है? सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इन दिस केस द रिपल्शंस, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस दे आर गोइंग टू बी लेस. तो यहाँ पे लोन पेयर दैट इज डायरेक्टेड. नाउ व्हेन यू लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट, जैसे कि PCl5 में प्रेजेंट रहते हैं टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, देयर आर गोइंग टू बी टू इक्वेटोरियल एंड टू एक्सियल. अगेन जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होगी वो लार्जर होती है विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बिकॉज एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा ऑफर करी जाती है और उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज गोइंग टू बी लार्जर दैन इक्वेटोरियल. शेप जो इसकी है दैट इज नोन एज द seesaw. Okay, the shape that is seesaw, right? फिर उसके बाद second type of halides जो ये बनाता है, as we've seen, the second type of halides they are hexahalides, right? So hexahalides पे SF6 बनाएगा.
SF6 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है that is going to be sp3d2, right? So we have over here sulfur, fluorine, so आप देख सकते हो यहाँ पे there are going to be 4 equatorial bonds and there are going to be 2 axial bonds, right? और shape जो इसकी होती है that is going to be octahedral. Okay, SF6 that has octahedral shape. Now यहाँ पे hexahalides में it is only fluorides, hexafluorides which are known. बाकी hexafluorides वगैरह they are not known because जो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होगा. तो अगर साइज यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलरेडी 6 अरेंज कर रखे हैं, तो अगर साइज बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू ऑफर स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज. और लार्जर साइज के साथ दूसरी चीज ये होती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कम हो जाता है बिकॉज लार्जर साइज को एग्जिस्ट करना है इन 6 पोजीशंस के ऊपर, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहेंगे या फिट ही नहीं होंगे, ठीक है. सो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो हो गया. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो गया तो इसका मतलब 6 हेलाइड्स अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इतने एरिया में, ठीक है. सो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए जो हेक्साफ्लोराइड्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल. Rest of them they are not formed, ठीक है. This is number 1. So this is the first question जो कि इसमें से आ सकता है कि why only hexafluorides exist. आंसर उसमें क्या लिखना है आपने कि fluorine has a small size as a result of which it can easily fit in, but as the size increases due to large size the coordination number has to be decreased. Therefore SCl6, SBr6 and Si6 do not exist. Then second question जो कि इसमें से आता है that is कि SF6 जो होता है that is chemically inert. Chemically inert क्यों होगा ये? Because already इसका extended octet आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has 12 electrons in the outermost shell. There is not even any empty d orbital which is going to be present. There is no lone pair of electrons which is present. ठीक है. So अगर ये किसी के साथ react करता है तो इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना lone pair of electrons है ना empty d orbitals है, तो उसकी वजह से this is not going to react, ठीक है. और SF6 जो है that is going to be extremely stable. So what all have we learned over here? Let's just pen it down. First हम लोग बोल रहे हैं कि SF6 can exist, SCl6, Br6 and Si6 do not exist, ठीक है. Then number 2, SF6 that is going to be chemically inert, ठीक है. एंड ऑल्सो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो हेक्सा क्या कहते हैं जो SF4 है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है whereas SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता. अब उसमें भी आंसर क्या हो जाएगा कि in this case in SF4 it still has a lone pair of electrons, number 1. Secondly, because only 4 fluorides are present, as a result of which SF4 may have tendency to form hydrogen bonds with water, पर SF6 में all are occupied, तो ये जो है इसके पास vacant d orbitals भी नहीं है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बनाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, उसकी वजह से SF6 जो है that is not hydrolyzed, right? So all this has been given in your notes. Now over here third then we have why SF4 is hydrolyzed whereas SF6 is not. आंसर इसका क्या रहेगा? Again due to steric hindrance in case of SF6
It is not able to form hydrogen bonds. Clear हो गया? Then let's go on to chemistry of oxygen and its compounds. So we are going to the first compound over here of group 16, which is going to be oxygen. Oxygen जो था, that was discovered for the first time by Priestley. Joseph Priestley was the scientist जिसने oxygen को discover किया था. So how do we prepare it? Let's go on to the preparation. Preparation जब हम इसका करते हैं, the first preparation is by heating oxygen containing salts. Oxygen containing salts में जैसे for example अगर हम लोग ले रहे हैं KClO3, okay, इसको हम heat करते हैं तो this is going to give us 2KCl plus 3O2. So oxygen that is going to be liberated. Then second, by thermal decomposition of oxides. तो जैसे for example अगर हम लोग ले रहे हैं Hg2O, इसको हम heat करते हैं, this is going to give us Ag, silver oxide, this is going to give us 4Ag plus oxygen. ठीक है? उसी तरह से अगर आप सिल्वर इसको मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हो 2HgO, this is going to give us 2Hg plus O2. ठीक है? अगर आप रेड लेड को हीट कर रहे हो, we have 2Pb3O4, then this is going to give us 6PbO plus O2. Okay? Or if you are heating lead dioxide, 2PbO2, इसको हम हीट कर रहे हैं, this is going to give us 2Pb plus O2. Alright, so 2PbO, sorry. So this is how you can get oxygen. Then thirdly, we can get oxygen by decomposing hydrogen peroxide. So the third reaction is by decomposition of हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है? सो इट इज गोइंग टू बी इजीली डिकम्पोज्ड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. नाउ ओवर हियर लार्ज स्केल पे अगर हमको ऑक्सीजन करना है प्रिपेयर, तो दैट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो हाइड्रोजन जो है दैट इज गोइंग टू बी गिवन एट द, क्या होगा, लेट्स सी. जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम, एसिडुलेटेड वाटर की होती है, प्योर वाटर की नहीं होती है, बिकॉज प्योर वाटर जो है डिस्टिल्ड वाटर दैट डज नॉट डिकम्पोज, तो हमको उसमें थोड़ा सा एसिड डालना पड़ेगा. सो वी हैव द रिएक्शन H2O to give us H positive plus OH negative. ठीक है? Let's look at the reaction of the cathode and the anode. At cathode we have over here H positive that is going to gain electron to give us H plus H to give us H2. ठीक है? फिर we have reaction at the anode. Anode की reaction क्या होगी? Anode is going to be we have what? OH negative
So 4OH negative minus 4 electrons to give us water plus O2. So oxygen that is going to be liberated at the anode and hydrogen is going to be liberated at the cathode. ठीक है? Then let's go on to the physical properties of oxygen. Physical properties of oxygen. First जो property है oxygen की, that it is a colorless, tasteless, odorless. Colorless, tasteless, odorless gas. ठीक है? फिर उसके बाद number 2, it is going to be highly stable in water or soluble in water. ठीक है? Then number 3, it can be easily liquefied. It can be easily liquefied under pressure. Then number 4, it has 3 stable isotopes, O16, O17 and O18. Right? And also molecular oxygen is paramagnetic in nature. According to the molecular orbital theory, it has 2 unpaired electrons in anti-bonding. 2 px anti-bonding and 2 py anti-bonding. ठीक है? तो anti-bonding 2px and anti-bonding 2py दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. Therefore, it is going to be paramagnetic in nature. ठीक है? Then let's go on to the chemical properties of oxygen. Knowing the chemical properties, chemical properties में जो सबसे important इसकी property रहती है, that is, it is a supporter of combustion. This you all know कि खुद तो ये combustible नहीं होता है, but if there is no oxygen, combustion cannot take place, burning cannot take place. ठीक है? Number 2, it reacts with metals to form oxides. So if we are doing reaction with metals over here, it is going to react with active metals at room temperature. Okay? जैसे for example हमारे पास आ गया सोडियम. सोडियम is a very reactive metal. So जितने भी reactive metals होते हैं उनके साथ ये react करता है at room temperature to form its respective oxides. ठीक है? उसी तरह से calcium is an active metal. It is going to give us calcium oxide. Magnesium is an active metal. जूनियर क्लासेस में यही एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टू शो बर्निंग. मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं ना, सो दैट इज केमिकल चेंज को शो करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट आप करते हो. सो दीज आर ऑल द एक्टिव मेटल्स. जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ओनली ऑन हीटिंग. राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम. So aluminium जो है that is a less reactive metal. So this is going to react only on heating, of course, to give alumina Al2O3. ठीक है? उसी तरह से आयरन भी जो है that is a less reactive metal. So it is also going to give us 2Fe2O3 its respective oxides. Okay? फिर उसके बाद थर्ड जो है that is reaction with नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है, यहां पे भी ये उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएगा.
ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 2H2 प्लस O2 टू गिव 2H2O। ओके, अब यहाँ पे दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इसको रिएक्शन को पहले हमें इंस्टिगेट करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ electric discharge. ठीक है, so we are going to give an electric discharge over here first of all, तभी ये reaction that can be carried out. फिर it can also react with nitrogen on heating to give nitric oxide 2NO, right? So this is another reaction. फिर सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह से सब नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करता है। सल्फर के साथ इट इज गोइंग टू गिव अस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज अ कंबशन रिएक्शन ओवर हियर एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू गिव एनर्जी। ठीक है, फिर इफ इट इज रिएक्टिंग विद फॉस्फोरस, it is going to give us phosphorus pentoxide P4O10, which is used as a good dehydrating agent, right? फिर उसके बाद it also react with, अब यहाँ पे metals के साथ react कर रहा है, वहाँ पे non metals के साथ react कर रहा है। It also has a tendency to react with compounds. So let's go on to the next reactions. That is reaction with compounds, right? Now compounds के साथ जब ये react करेगा, जैसे for example it reacts with HCl at a temperature of 700 Kelvin, and यहाँ पे catalyst is also required, तो CuCl2 के साथ react करता है to liberate chlorine. Greenish yellow gas is going to be liberated जब ये वाली reaction होगी। ठीक है, in a similar manner it also reacts with ammonia. Ammonia के साथ react करता है and this is an important step in the preparation of nitric acid by Oswald's process. Okay, so this is going to give us, ये हमने करा है already, nitric oxide plus water. Right, so this is the base reaction for the preparation of nitric acid by Oswald's process. Okay, उसी तरह से ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है in presence of a catalyst B2O5 vanadium pentoxide to give us sulfur trioxide. So this is also an important reaction for the preparation of sulfuric acid. ये हम अभी आगे करेंगे by the contact process. Okay, then it has a tendency to react with carbon disulfide, right? This is going to give us two oxides, carbon dioxide and sulfur dioxide. Okay, and also it can react with zinc sulfide plus oxygen. It is going to give us again two oxides, as you can see, zinc oxide and sulfur dioxide. Okay, और एक important reaction जो इसकी है, that is reaction with hydrocarbons. Fifth reaction which we are doing, that is reaction with hydrocarbons, right?
सो हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बिकॉज दीज आर द मेन कंबशन रिएक्शंस. जितने भी फ्यूल्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी हाइड्रोकार्बन्स. सो उसके साथ उसकी कंबशन होती है तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग बायोगैस व्हिच इज मीथेन. ठीक है, मीथेन की जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं या कंबशन करते हैं इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हाइड्रोकार्बन्स के साथ इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट. सो वी हैव ओवर हियर 2 ऑक्सीजन. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो हीट लिबरेट हो रही है वो भी बढ़ती रहती है. ओके, सो वी कैन डू अनदर रिएक्शन ओवर हियर विद इथेन C2H6 O2. दिस इज गोइंग टू गिव अस 2CO2 प्लस 3H2O plus heat. So we have over here 7/2 oxygen. Right? Then you can write down the uses of oxygen. Uses number 1, it is used in oxyacetylene flames. It is used in oxyacetylene flames for welding purposes. Number 2, it is used in metallurgical processes. It is used in metallurgical processes to remove impurities. Number 3, it is essential for life support system. Number 4, liquid oxygen is used as rocket fuel. Number 5, it is used in large number of oxygen containing organic compounds. And number 6, it is used as oxidizing agent and bleaching agent. It is used as oxidizing agent and bleaching agent. ठीक है? So this is all what we are going to do today, right? Tomorrow we go on to oxides. हमने करने हैं क्या होते हैं, and then we are going to do ozone. Okay?